Good evening, everyone, and welcome to a Silver Genie Adda webinar. My name is Sansada Sahu, and I'll be your host for the evening. Before we begin, can I ask the audience to guess which state the music we just played was from? I'll give you 10 seconds. Please write down on the chat if you can guess which state the music was from. I think it should be a very simple guess, but yes, I think I got my first response. I hope everyone else can also just type it down so that we know everyone is here and present. My apologies. For some reason, my video is not working today. I've tried No multiple worries, times. sir. My apologies on that. Uh, Hello, Arvind sir. Hello, G. Good Hi. evening. Good evening. Welcome Sorry. home. Thank you. Hello, Dev sir. Hi, Saurveshwar. How are you? Hi, I'm good. Wonderful to be here with all of you. Thank Yeah, you. wonderful. Thank you, Same. sir. Likewise. Okay. So, as Arvind sir rightly said, it is from Gujarat. That was the traditional Gujarati folk music. So, thank you for that answer, sir. And I'm hoping Thank everyone you. is here now. Okay, so there's a special reason why we chose to begin this with. It's to share that our upcoming cohort will be traveling to Gujarat to experience the Run of Kutch from December 4th to 6th. And the highlight, you get to see the moon shining over the white sands of the desert. And trust me, it's a breathtaking sight. But more on that later. Let us begin our session. For everyone who's new here, welcome to Silver Genie Adda. This is a vibrant online space that brings together seniors, soon to be seniors, and their families to share experiences and build meaningful connections. Every month, we come together to exchange stories, engage in heartfelt conversations, and participate in activities that bring joy and a sense of togetherness. And might I say, what a joy it is to be here with you all tonight, in a room filled with warmth, intention, and shared humanity. This gathering celebrates the International Day of Care and Support, where we echo this year's powerful theme, Care and Support for All, addressing all right holders, including both those providing and those receiving care. At Silver Genie, we decided to celebrate this very special day throughout the month of November because caregivers deserve to be seen, valued, and appreciated. Care is the foundation of everything. It shapes our lives, our communities, and even our economies, often through countless invisible acts of love and effort that keep the world running. It's time we recognize that the human rights of those who provide and receive care must be seen, heard, and acknowledged. On 29th October, we launched a few key initiatives. Thank you for sharing the screen. First, we launched the Caregiver Reflections, a dedicated safe space where caregivers and care seekers can share real stories. Our first feature, Invest in a Caregiver, was written by Ms. Rema Sundar, who beautifully explores how supporting caregivers directly improves the well being and mental health of elders. It raises the $1 million question: do the elderly truly need gifts of gold and silver, or do they need compassion, empathy, and care? I'll leave you with that thought, but do read our blog to perhaps find an answer. Next, we launched Wanderlust with Care, where we curated two unique travel experiences reflecting our commitment to inclusivity, accessibility, personalization, cultural immersion, and safety for vulnerable groups. The first was a personalized Agra trip for a solo international woman traveler. And don't forget to read her blog, where she shares her experience of exploring one of the wonders of the world. The second was a cohort experience celebrating the famous Jagadhatri Pujo of Chandan Nagar, West Bengal. This blog was written by our very own cohort members who celebrated this beautiful festival with us. And as the world celebrated the International Day of Care and Support on October 29th, we are reminded that care is a shared responsibility. It is the thread that runs through every journey, a philosophy that optimal health is nurtured not just by caring for the body, but by cultivating purpose, connection, and inner balance. And with that thought in mind, let's jump right into our session. I am very thrilled to announce our moderator, Mr. Arvind Mittal. He is the business head at Money Madan Ventures Private Limited, a real estate company operating in India and Dubai. He is a devoted son, husband, and father, and he's also a social worker, wellness mentor who believes it's never too late to start living a healthier and a more fulfilling life.
And he's also a marathoner, cyclist, and swimmer. And he has helped many individuals, some well past their 50s, embark on their own journeys. And he has guided them to overcome mental blocks and build lasting healthy habits. Sir's story is one of balance between business and well being, service and self growth. His practical approach, rooted in empathy and experiences, makes him an inspiring voice for those seeking transformation later in life. He is a lifelong learner and he continues to lead by example. And he shows that age is just a number when it comes to fitness, mindset, and purpose. Welcome, Arvind, sir, and thank you for being part of our. Thank you, Shobla. Thank you. Now, introducing our next speaker of the evening, Mr. M.S. Suresh. He's an accomplished senior executive with the vision and leadership to strategically plan, direct, and execute company objectives, capitalizing on emerging and existing business opportunities. He has a proven track record of achieving sales targets through trusted relationships with Fortune 500 companies and by managing multiple business divisions, contributing to overall organizational growth. He has extensive experience working with C level decision makers, especially in the insurance sector across brokers, insurance, and clients. Sir brings an unmatched insight into leadership growth and strategic management. We welcome you, sir, to our Adda webinar. Thank you for being here. Good evening. Namaskara. Thank you, Sansita. Happy to be here. Thank you, sir. And introducing our second panelist, Mr. Soreshwar Sen. He's a mentor and educator, guiding students and professionals towards impactful careers in the social development and climate action sectors. He's the founder and mentor of Catalyst Learning Services and serves as a visiting faculty at TIS, University of Calcutta, and St. Xavier's College, Mumbai. He is a passionate social entrepreneurship educator and motivator. Sir actively strengthens social science teaching and engages as a moderator, MC, and judge at academic and corporate events. At just 23, he transitioned from being a design engineer to pursuing his true calling, teaching and training. Through Catalyst, he envisions revolutionizing social impact centering education in India, positioning humanities driven careers alongside those in science and commerce. Since 2018, as a faculty member at TIS, he has shaped future change makers, empowering individuals to drive social transformation and climate action across communities. Welcome, sir, and thank you for being part of our webinar today. Thank you so much. Thank you so much. Really humbled and honored to be with all of you. Looking forward. Thank you. Thank you. Thank you, sir. And introducing our third speaker, Mr. Dev Sharma. He is the founder and CEO of Dev Medieval LLP, a leading provider of elder care at home services. With a deep passion for enhancing the lives of senior citizens, he ensures personalized care in the comfort of their own homes. His approach prioritizes compassion and reliability and offers families peace of mind through expert services tailored to each individual needs. A very warm welcome, sir, and thank you for joining us today. And now I'll hand it over to Arvind sir to take the conversation forward. Thank you so much, Sansita, for warm welcome and introducing all of us. Welcome all the speakers, amazing people around me. And, as all of us know, India is going to become, India is the youngest country in the world today. And still it has around 153 million people with 60 plus age, okay, which is close to 11%. Number may have increased because this data is from 2023, all right. And we all are going to become senior citizen tomorrow, okay. And care is the most essential thing, for all of us. It is, sometimes we think that this is important only for senior citizens. It is important for us also. If we will care for them today, somebody will care for us tomorrow, right? So with this mindset, on this context, we have three amazing speakers, Suresh, Soreshwar, and Dev. We will discuss how they think about it, what all is in their mind, and how we all can be benefited from their knowledge. All right. And in between, I will keep sharing my stories as well.
from. Okay, so I have a set of questions already prepared. Would like to start with Suresh. Okay, so can you hear me, Suresh? Yes, Mr. G, go ahead. All right. So to begin with, could you share in your own words what care and support for all means to you? Why is this message important today? So Very let me, simple but very important question. absolutely important and very relevant to the age that we all live in. Um, I'll start with a couple of statistics, a couple of data points, and then I will answer your question thereafter. Um, Please. India is an aging country. We do have the demographic dividend today, but perhaps in 5 to 10 years now, we will start tipping over that demographic dividend and moving towards a slightly older society as we move forward. Um, estimates, various estimates tell us that by 2030, which is not too far off, maybe 5, 6 years from now, India will have close to about 350 million people over the age of 65 living across our cities. And close to about 60-65% of them are going to be living in the urban and the tier one cities. So there is a huge need and space for us to prepare and work towards care, especially for elders and for the others as well. You asked me a very specific question that what do you mean by care and support for all? And Right. one of the things that I'll just give you a small background as to why and how I became part of this caregiving industry back in about a decade back when I decided to move away from the insurance industry and start something on my own. We had the opportunity to serve a couple of senior citizens who were my relatives at that point in time, and we were looking for caregivers to take care of them at their home. And believe me, 10 years back, the concept of caregiving was not there. The concept of somebody coming home and taking care of patients alone was not there. And then we had to somehow scratch our heads and get it done. That was the germination of the idea of why I can't be in this caregiving business. And ever since I have been in this caregiving business, taking care of patients at home and hospitals, etc., etc. But the moot point is that caregiving is an important component of our life, whether we are taking care of it without realizing it at home or doing it as a formal exercise somewhere else. When we talk about care and support, it means we need to include everyone, regardless of age, gender, background, income levels, ability, or even social background. Everybody should receive the help, kindness, and resources that they need to live a healthy and fulfilling life. Let me break down what it is. What do you mean by care? Care is showing concern. It could be physical, it could be mental, it could be even social well being. And it Absolutely. could also include many things, like, for example, healthcare, education, it could be mental health services, so on and so forth. So, when we talk about care and support, we must understand that the person receiving the care, and we have to understand what the person requires, and we need to prepare ourselves in addressing their needs. The second thing that we all need to do is to mobilize the support. What do you mean by support? Support is just providing assistance or providing encouragement, especially when people are in some sort of trouble or some sort of difficulty, be it their social status, their economic status, or even their healthcare status. So essentially, both for care and support, it means one, preparing yourself in terms of understanding what the other person needs, one, two, and having a great attitude in terms of executing what the other person wants. That to me, the essence of what you mean by care and support. Absolutely great. Bang on. With this, I remember a story, that a lady who was around 45 was taking care of her dad who was 70 plus, 75 plus, and he was suffering with dementia. And he died at the age of 81 or 82.
once he died, she forgot how to live her own life and she needed a caretaker. Okay. Mm. So we don't only need to think about caring others, we need to train Ourselves. ourselves or our caregivers also, so that, and family members become emotional. They don't remain as caregiver, they become emotional. But a caregiver will rarely become emotional. Caregiver will remain a caregiver. So that is why caregiving services are essential. So great. Thank you so much, Suresh. You have answered me so very well. I'll go to Sorveshwar now. My next question is from you. Soreshwar, from your perspective, how important is the narrative transform care and support for all in shaping the way we think about care today? Thank Over to you. you, thank you, thank you, Arvind, for asking this question. If if I'm allowed, I actually had kind of wanted to share a little screen to just kind of exemplify our Prakhar, please approach do the needful. towards. So I think I can share my screen. I'll just check this right away. Prakhar, Sansita, are you Yes, there? yes, you can. Yes, sir. Yeah, Please feel free to please share share your it. screen. So I hope my screen is visible to everyone. Yes, Great. So uh, in terms of how we address caregiving and care as a transformative approach and framework, let's say with our work at Catalyst, Mr. Arvind, and for all, is to understand that how can career pathways strengthen the entire ecosystem of caregiving, because caregiving, as we discussed right at the start, is not really about a one way procedure where you're looking at specifically the service and the service provider or the service receiver. Just to share an example, very recently, this is early this year, and I would request all of you to actually Google search and find this news. um, Not very far from Farakka, which is a very well known location in Bengal, where the river Ganges actually diverts into two broad streams. One of our mentees, Debankur, who has been working as a CSR professional, was part of initiating the first ever uh, healthcare facility at this place called Ballalpur, which has a population of 1 lakh people. So this entire location with 1 lakh plus population didn't have a single healthcare facility in terms of a primary healthcare or even a hospital. And people had to move out of that place and go to the closest possible, which was obviously at some distance, because you can imagine if 1 lakh people are residing within a radius and there is no healthcare facility, then there must be a large distance that they had to cover. So what we try to propose at Catalyst is that care giving is connected with many aspects of sustained interventions. It is not just, let's say, providing care, right? So just to help all of you realize that in terms of care and support, we have to look at it from point of view of investments. We have to look at it not just as a charitable act, for sure. We have right. to build an sort of an economic activity around it. So I just thought that maybe this can be an interesting example Correct. which I would like to share with all of you. Thank you. Thank you. Wow. Thank you. Thank you so much, Soreshwar. And it is very, very inspiring as well as, thought provoking that a city like Balalpur, which has 1 lakh plus population, did not have a hospital care facility. So, I'm I'm having goosebumps listening to this story. Great. Kudos to Debankur and to you who has supported this initiative. Now, as you rightly said, it cannot remain a charitable activity.
one has to think about economic angle, then only this will become a household thing. Otherwise, very few people would get care, and in times to come, it is going to be very difficult to survive. Oh, now I will go to Dev. हेलो देव. सो हेलो देव सर. देव ने हमें कहा था कि वो हिंदी में बात मैंने करना मैंने पसंद मैंने करते रिक्वेस्ट हैं. की थी. तो हमने उस बात को ध्यान में रखते हुए हमने तय किया है कि हम क्वेश्चन भी हिंदी में पूछेंगे और आपका जवाब भी हिंदी थैंक यू में देंगे. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो हाँ मच. जी, थैंक यू. सो देव, जब हम केयर की बात करते हैं तो हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ मेडिकल नीड्स के बारे में सोचते हैं जनरली, कि भाई उसको दवाई मिल जाए, उसको हॉस्पिटल मिल जाए. लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि इमोशनल केयर और कंपेनियनशिप भी उतने ही इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं? क्योंकि मैं देखता हूँ आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं इसके बारे में, एंड मैं चाहूंगा आप सबको शेयर करें. थैंक यू. थैंक यू सो मच सर. सर, जैसे कि ये मेरे पिछले 11 साल का अनुभव है कि हमने जो फील किया है कि जो सीनियर सिटीजन है, मैं स्पेशली सीनियर सिटीजन के बारे में ही बात करूंगा. तो जो ये मेरी अपनी मतलब जो मैंने फील किया वो बता रहा हूँ कि इनको 80% सीनियर सिटीजन को इमोशनल हेल्प चाहिए और 20% मेडिकल नीड चाहिए. वो ये चाहते हैं कि जो केयर गिवर है ना, जो काम हम मतलब उनके बच्चों को करना चाहिए था, बच्चे किसी कारण से उनसे अलग हो गए हैं, मे बी वर्क की वजह से या इस स्टेट से उस स्टेट चले गए हैं. अब एक एज तो सबकी आती है, उस दौरान वो चाहते हैं कोई हमारे पास बैठे. और क्योंकि अभी क्या एक परसेप्शन बन गया है कि भाई केयर का मतलब है टाइम पे दवाइयां देना, नहलाना धुलाना, डायपर चेंज करना. अरे भाई, शरीर की केयर नहीं करनी, उसके अंदर जो आत्मा बैठी है ना, उसके भी अपने इमोशंस हैं, उसको भी बिल्कुल. सर्दी गर्मी लगती है. तो एब्सोल्युटली. कोई उससे पूछ तो ले भाई तुम क्या चाहते हो. एक रोबोट की तरह काम नहीं करना ना कि 9 बजे दवाई दे दी, 12 बजे दवाई दे दी, 2 बजे दवाई दे दी, 8 बजे दवाई दे दी. जब डायपर खराब हो गया तो डायपर चेंज कर दिया. कोई साथ तो बैठे, उससे पूछे भाई, वो अपनी यात्रा बताएंगे कि कैसे मैंने अपने बच्चे को अफसर बनाया, कैसे अपने बच्चे को मैंने विदेश भेजा, क्या मेरे से गलतियां हुई. वो सिर्फ कहना चाहते हैं और हम हमारे पास सुनने का टाइम नहीं है. तो जो करेक्ट. मैंने फील किया है कि अगर हम सच में केयर वर्ड यूज कर रहे हैं ना, तो हमें किसी की आत्मा को झंझोरना है. शरीर से तो सेवा कोई भी कर लेगा, किसी को भी पैसा देके बुला लेंगे, वो बदल के चला जाएगा. अब आप इसमें थोड़ा सा मैं 1 मिनट और लूंगा. जब हमारी माँ रोटी बनाती है ना, तो वो ये नहीं पूछती कि कौन कितनी रोटी खाएगा. अगर हमने घर पे काम वाली रखी हुई ना, उसका माइंड सेट है 3 रोटी भैया खाएंगे, 2 रोटी भैया खाएंगे, 2 रोटी दादू खाएंगे. उसी हिसाब से बेल के थाप के निकल जाती है. उसमें सच में बिल्कुल. इमोशंस नहीं है, सच में. और हमने जो फील किया ना, ये सारा सिस्टम ही इमोशन पे टिका हुआ है. एल्डर केयर सिर्फ और सिर्फ इमोशंस पे चलती है. बिल्कुल आप ठीक. कितना उसको टच कर पा रहे हैं. मेडिसिन भी तभी लगती है सर. चार दो पौधों को लेके अगर आप कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे, गड़ 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 बोलेंगे, और दो पौधों के साथ बहुत प्यार से बोलेंगे, यकीन मानना उसमें से ही फूल खिल के आ जाएंगे. यही एल्डर केयर है. बस इतनी एल्डर केयर है, ये मैंने समझा सर. वाह जी वाह, बहुत खूब, बहुत ही थैंक यू उम्दा सर. थैंक यू सो तरीके मच से सर. आपने एक्सप्लेन किया. एंड सच में यही एल्डर केयर है. और मतलब मैं, क्योंकि मेरे फादर साहब बेड रिडन हैं फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, मैंने आपको भी शेयर किया था. हाँ अब जी, हाँ जी, हाँ जी. जब भी हम उनके साथ बैठ के गप्पे मारते हैं तो उनको किसी दवाई की जरूरत महसूस नहीं होती है उस समय पे. ठीक है. और मतलब ऑलमोस्ट 6 साल से बेड रिडन होने के बावजूद वो बिल्कुल हेल्दी हैं, पूरी अपनी दिनचर्या करते हैं, अपने खुद कुछ नहीं कर सकते हैं लेकिन फिर भी सब कुछ करते हैं. और आज भी उनकी डांट से मुझे डर लगता है. तो क्योंकि उनकी केयर प्रॉपर हो रही है, तो मतलब उनमें इतनी जान है कि वो डांट भी सकते हैं, और हमें इतना प्रेम है कि हमें उनकी डांट से डर भी लगता है. तो सर, आप यकीन मानना, उस डांट में ना आपको लगता होगा कि वृंदावन का प्रसाद आ गया. एक्चुअली एक्चुअली तो मतलब ये आपने जो बात कही ना, दिस हैज टच्ड मी के इमोशन ही केयर है. इमोशनली अगर आप किसी से जुड़ सकते हैं तो वही केयर है. बिल्कुल ठीक बात है. बहुत बढ़िया. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस. आई विल गो प्लीज सर. बैक टू सुरेश. एंड फॉर माय नेक्स्ट क्वेश्चन, जी. आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं पढ़ के ही सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैंने सवाल प्रिपेयर कर लिए हैं, तो मैं अब उससे बाहर सोच नहीं पा रहा हूँ. तो प्लीज ओवर गो द अहेड. लास्ट डिकेड,
we've seen a shift from hospital-based care to home and community-based care. What do you believe in is driving this shift, and what does it mean for the future of long-term support? Over to See, you, sir. that's going to be the future. Okay. Care in the hospital is not sustainable long term. It's very expensive, number one. Number two, at the hospital, what the doctors and what the hospitals also don't tell you is that there is something called hospital acquired infection, HAI. Okay, none of the hospitals will talk about it, and it's not just in India, it's a global phenomenon. Think of the situation that somebody is in ICU recovering, and somebody else who may be getting into ICU in the third day or fourth day, coming into the ICU for the first time with infections. And you can't have individual ICU rooms everywhere. You know, most of the ICUs are common rooms, which about 10 beds or 15 beds, etc. There is a distinct, despite the sterilization that the hospitals have, despite all the precautions that the hospitals may take, there is a real threat that the recovering patient may catch up with some infection that he or she may acquire. So that's a very real phenomenon. Third, there is something, there's a psychological phenomenon which Devji also just touched upon in terms of emotional connect and emotional balance and emotional support. How much ever you want to be in the hospital, at the recovery stage, it's important to be at the ambience and surroundings that you are familiar with. So globally, there is a transformation happening from a hospital-based care to a community-based care. And there are some reasons for it. Like I said, cost is a reason. Like I said, acquired infections a reason. But it's also because that more people uh, have long-term illnesses. And since they have long-term illnesses, they will be better cared for and better managed at home. That's one of the key things that one must understand. The, the third thing is that personalized care. At the hospitals, yes, you will have nurses, you will have doctors coming in and seeing you, etc. But seldom you will get personalized care unless you're in a super specialty room. That becomes very, very expensive, and not everybody can afford it. Uh, the last thing what I would say is that technology over the last few years have helped community-based care or home-based care to take off considerably. I think there is a significant improvement in technology in terms of monitoring, mentoring, telehealth, teleconference. All of these things have helped the patient family, or even the treating doctors to have a greater idea of what is happening to the patient, even though the patient or the person needing the care may not be in the hospital. Uh, the last thing I would say, building hospitals is an expensive phenomenon. The last I checked, any good hospital in an urban center will cost not less than 15 to 20 lakhs per bed in terms of infrastructure, in terms of all the other things that is required. Right. Therefore, in terms of long-term sustenance, in terms of long-term care and emotional support, transformative care is right now happening in front of our eyes, from hospital-based care to a community-based or home-based care. I think that's where the future lies. And that's a Thank great question. By the way, all of us must understand that all of us have families. All of us will have some seniors or some people requiring medical help. So when we go to the hospital, we must have an idea of how we need to take care of the patient when they come home. And that's part of the journey as well. True. Absolutely correct, Suresh. Thank you so much for sharing so very well. Now I'll go back to Soreshwar. And since Soreshwar, you're working around so many policy making, my next question to you is, as we work to build a stronger care ecosystem, what policy steps are needed to ensure caregiving is recognized as an important क्या community role? In India, there is no way वो ज्यादा that बोल रहे हो यार थोड़ा सा कम बोलो government is supporting this यार industry as of now, except of few small policies they made, like senior citizen living policy recently announced by government.
Okay, but otherwise there is no specific ministry around this. In many other developed countries, we can see, specific ministries around this who work towards, taking care of their people. So, how do you think, it should shape up? Right. Great question, Arvind. Again, if you allow me, would like to share a story through my slide, and Please do. if that kind of enables people to understand it better. So I'll Wonderful. just quickly Please go back do. to my slide. And so as far as policy is concerned, what we try to believe in is that, policy on paper, policy as a document, policy as a, let's say, plan, um, a lot of times what happens is there is a lot of resource investment in making the policy. Rather than that, what we believe and what we have noticed maybe has kind of created certain spark in terms of uh, shedding some light at the end of the tunnel is implementation. So instead of like really looking for a ministry, quote unquote, who is helping us to like create a policy, or instead of like searching for a policy, let's try to get together and do certain things which can strengthen the care economy. So, for example, since 2023, just to share, we have been trying to reach out to the teachers at school level and talk about various aspects of the caregiving industry and how students can actually contribute through career pathways. So Wonderful. yes, so and while doing it, what one of the very interesting aspects that we have observed is that a lot of times people don't look at the interconnectedness of sectors, because the moment you enable, let's say, for example, a hospital, which of course Mr. Suresh mentioned, that can also be an expensive affair, it also kind of creates a trigger effect to someone who is trying to reduce the cost of care, right? So there can be an individual or a collective who can be supported with mentorship, idea generation. Nowadays, our startup ecosystem is so vibrant in our country. It is a matter of identifying these discussions right now. The dialogues that we are in is something I would love to share it back with all the student community, the investors who could be watching us, right? The potential stakeholders. Because just to give you an example, one of our, again, graduates from Tata Institute of Social Sciences initiated an enterprise called CanFem, focusing on supporting female cancer survivors with products and services that can help them to sustain better, not just from a curative point of view, but also, reduce their cost. Because a lot of times, as Mr. Suresh rightly mentioned, that, there is a greater requirement to go to a hospital, but that can be an expensive affair. So when you ask about policy, when we have, Arvindji, uh, samples of impact that we can share back with the community, Wonderful. that this can trigger an inspiration, to maybe few more people who could be watching us right now. And Right. one of them might say, oh wow, this is a great idea, or why can't I reach out to maybe this organization, or why can't we connect with Silver Genie, why can't we connect with uh, Catalyst? And I guess that is going to be the major approach, rather than, let's say, talking about a policy. Because once we say there is enough impact stories to be shared, and people are genuinely benefiting through the changes that they're looking forward to improve their quality of life, the legislative process becomes much more easier and simpler. Thank you so much. Absolutely. Yeah, Absolutely. so just to add to what Saurabh said, and he's right in terms of the industry needs to come together in terms of self-regulations, and testing need to come together in terms of forming guidelines and stuff like that. I was part of the CIA committee in Karnataka, for example, some time back, which looked at forming guidelines for senior care, for geriatric care, etc. And I know for a fact that the Ministry of Health and Family Welfare has formulated specific guidelines for care, care at home or care at mental
institutions and stuff like that. Uh, and that is required as well going forward, because as the care industry grows and as the care industry expands itself, a lot of other stakeholders will come in. Insurance will come in, pharmaceutical and hospital industry will come in, and it will require a certain amount of statutory guidelines for them to approve who's doing the right thing. Absolutely. Thank Absolutely. you. Because interestingly, right now, as we are speaking, I guess in a day or two, there is a large confidence with all insurance stakeholders together. So, And and if I'm turning up at that event, I will definitely be, putting forward some of these inputs, because I guess, this is how really we can move forward. Rather than putting the onus on maybe someone specific, let's distribute the onus. Let's work on our own individual capacity and strengths, our contacts, our networks, right? Let's find that like-minded individual or collective who can really vibe with us, quote unquote, because that is where we feel, right now as we are speaking, the community can really become the intervention tool to take things and sustain forward. Thank you so much. Absolutely, absolutely. I can very well relate with this. During COVID, in the year 2021, I think during the third wave, in my society where I live, there are around 636 families are living, and 50% of them were hunting for concentrator. So there was a demand of around 300 plus concentrator. 10-12% of them were looking for oxygen cylinders. Okay. And all of them were looking for emergency medicines. And a lot of messages were going around in the WhatsApp groups of our society. And I, along with 21 other mind-like people, we created a WhatsApp group. We collected a very meager amount of 10,000 rupees each, arranged two concentrator in one of the room in the society, one oxygen cylinder, and few emergency medicines, and announced in the entire society that we have ample amount of medicine, oxygen, and concentrator available in stock. Anybody needs it 24/7. These 21 people are available for support and your care. Trust my words. We used only that concentrator, we used only twice. We did not use the oxygen cylinder because nobody needed it. But the amount of threat everyone was feeling, created a demand. So if we all come together, as you said, as Suresh said, as they've already doing it along with his friends, if we all come together, this world will become a wonderful place to live, and we can solve all the problem of the world. Together we can do more. Wonderful, great. You are pushing me to share a lot of things. Chaliye, now I'll come back to Dev. Dev, आपके काम का सबसे रिवार्डिंग हिस्सा क्या है, और आपको हर रोज मोटिवेटेड क्या रखता है? मतलब क्या चीज है जो आपको हमेशा दौड़ाए रखता है सुबह से शाम तक बुजुर्गों की सेवा करने के लिए? आप अनम्यूट कीजिए, आपने जो मैंने फील किया ना कि काम तो देखो वर्कर ही करते हैं, ठीक है जी, पर वहां से कॉल आती है। हमारा क्या है कि स्टाफ जाने के बाद हम उनके कनेक्शन में रहते हैं, आइदर माई मैनेजर और मी। तो उस केस में वो ही कहते हैं कि ना, जो काम आप कर रहे हो ना, ये काम हमारे बच्चे कर रहे होते हैं। मतलब हम आप मतलब उनके चेहरे पे जो स्माइल आती है, जो कॉन्फिडेंस आता है ना, और यकीन मानना, ऐसा लगता है कि दिन बन गया। वाह, जब वो ये कहते हैं कि मतलब आपसे बात करके दिल हल्का हो गया। आप यकीन मानना, कई बार हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं ना, वो डॉक्टर किसी से फोन पे बात कर रहा है और साथ साथ आपको देख भी रहा है, आपको वो आनंद नहीं आएगा। वो फोन छोड़ के सिर्फ और सिर्फ आप पे पूरी तरह से कंसंट्रेट कर रहा है ना। शायद मेडिसिन उसने पहले से प्री डिसाइड है वही देनी है, पर हमने हमने पेशेंट की बात सुन ली,
हमने सीनियर सिटीजन की बात सुन ली, उनको इसी बात का एहसास है कि मेरी बात सुन ली गई है, तो लगता है कि दिन बन गया, और उनसे हमें इतना मोटिवेशन मिलता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं, और कोशिश करते हैं कि अपने जैसे और लोग खड़े कर पाए, क्योंकि हम तो हर जगह जा नहीं सकते। तो कोशिश ये रहती है कि जो स्टाफ है ना, स्टाफ फीलिंग्स के साथ वाला हो, वो जाके कोई भी किसी के बच्चों की कमी पूरी नहीं कर सकता, ये डेड श्योर है। बट अगर आप कुछ परसेंटेज भी कम कर देते हैं ना, तो भी बहुत बड़ी बात है। और एक चीज और मैंने देखी है, जो समझा है ना, लोग सुनते हैं, और बुजुर्गों को लेके ना, सुनना एक अलग मैटर है, समझना है हमें, सुनना नहीं, हमें समझना है। तो जब हम समझते हैं ना उनकी बातों को, तो मतलब फील होता है कि थोड़ा और लगता है कि प्याज के जो छिलके होते हैं ना, कि एक परत और, अभी तो कुछ समझा ही नहीं, फिर कोई नई बात बता देते हैं, फिर हमें लगता है कि हम तो बहुत कुछ जानते हैं। तो ये बड़ा मोटिवेट करता है कि एक स्टेप और आगे जाके देखते हैं। और यकीन मानना, काफी सीनियर लोग बैठे हैं इस डिबेट में और इस पैनलिस्ट में, वो मेरे से बेहतर जानते हैं, हर सीनियर सिटीजन की एक अलग स्टोरी होती है, और हमें लगता है ये लास्ट स्टोरी है, इससे बेटर स्टोरी तो कोई हो ही नहीं सकती, फिर एक स्टोरी और आ जाती है निकल के। ठीक तो बात है। ये मोटिवेट करते हैं कि एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं। मैं कभी नहीं कहता अपनी टीम से कि आप 10 स्टेप की सोचो, आप सिर्फ नेक्स्ट स्टेप की सोचो, बस। एक बार जीपीएस सेट कर दिए जयपुर जाने का ना, फिर वो दिखाता है 300 किलोमीटर है, छोड़ दो उसको, फिर दिखाएगा इस गली से निकलना है, इस गली से निकलना है, इस गली से निकलना है। तो हमें नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, तो वही हमें मोटिवेट करता है सर। वंडरफुल, बहुत And बढ़िया। and to add to what Rahul, what Dave ji said, what motivates us getting up every day is to see the smile in the face of the person who's getting the care. At the end of the day, that's blessing, and रि- that blessing is very important, because like everybody says, what goes around comes back to you. So all of us will get to 80, 90 at some point in time, and we will require that kind of care and dignity at that age. So I'm sure we all understand the laws of karma and what happens when one does good deeds at this stage. तो सर एब्सोल्युटली। एक जी। बात और कहना चाहता हूँ, सर की बात से मुझे एक बात और याद आ गई, छोटी सी बात है। दिल्ली में दिल्ली कैंट है, और यहाँ पे एक शंकर विहार की जगह है, तो ज्यादातर आर्मी ऑफिसर रहते हैं। तो एक बार मुझे जाने का मौका मिला, उन्होंने बोला कि आप भी कंपनी कौन चलाता है, एक बार आप भेजिएगा। तो मैनेजर ने बोला कि आप सर, आप एक बार होके आइएगा, आंटी आपको बुला रही है। फिर मैं वहां गया, तो यकीन मानना, जैसी मैंने, मेरी आदत है मैं बुजुर्गों के सीधे पाँव छूता हूँ, तो जैसे मैंने पाँव छुए ना, तो उन्होंने हाथ ऐसे किया, बुजुर्गों की आदत होती है, आप उनके पास ऐसे जाएंगे तो उनका हाथ ऐसे जाएगा, आपके सर के ऊपर जाएगा, ऐसे जाएगा। तो जैसे हम देखते हैं कि इसमें से कुछ निकल रहा है, एनर्जी निकल रही है, तो वो फील हुआ। और एक ओरा था उनका, वो प्रिंसिपल थी, पंजाबी बाग में एक स्कूल है, वहां की प्रिंसिपल थी। और जो उनके हस्बैंड थे, उनको हम बोलते थे, वो राय साहब के नाम से जानते थे, वेदर डिपार्टमेंट लोधी रोड के डायरेक्टर थे वो राय साहब। कहते थे जो तुम्हारे अंकल ना जब जीप पे आते थे ना, इनका इतना ओरा था, ये इतना हवा था, कि लास्ट तक का आदमी खड़ा हो जाता था पीछे, जो प्यून भी होता था। आज ये बेड पे पड़े हैं ना, कोई पूछने वाला नहीं है, तो वो अपने मन की बात कहना चाहते थे। तो वो एक बड़ा एक ओरा आता था, वो चीज फील करते हैं कि भाई एक स्टेप और, एक स्टेप वो भगवान ने हमें मौका दिया है। किसी को कोई सुनार बनाते हैं, किसी को कोई मतलब भगवान किसी को डॉक्टर बनाता है, किसी को सीए बनाता है। भगवान ने तो एक इतना बड़ा काम दिया ना, कि डॉक्टर भी हमारे पास आते हैं, सीए भी हमारे पास आते हैं, एडवोकेट्स भी हमारे पास आते हैं, आईएएस भी हमारे पास आते हैं, आईपीएस भी हमारे पास आते हैं। ये दुनिया का एकमात्र काम है जहाँ दुआओं के साथ पैसा और पैसों के साथ दुआएं मिलती हैं, सिर्फ वाह। एकमात्र काम है। यकीन मानना, हर वंडर। कुछ भी आप ले लोगे ना, तो कंपेयर कर देंगे, मुझसे बोलते मैं इससे बढ़िया दिलाता तुम्हारे को, पर इसमें कोई नहीं कहता कि मुझसे बोलते मैं इससे बढ़िया दिलाता। ठीक बात है। घर Well कैसा said. भी हम दिला दें, किसी को बना के दे दें, कुछ भी कर दें, लोग बोल हाँ। देते हैं इससे बढ़िया दिला सकते थे। खैर, ठीक बात है। बहुत बढ़िया। सो हमारा टाइम की घड़ी बहुत तेजी से भाग रही है, ऐसे लग रहा है कि बातें कुछ हुई नहीं और टाइम खत्म होने पे आ गया। संचिता प्रखर। अच्छा कुछ टाइम जल्दी निकल जाता है। जल्दी रियली निकल रियली जाता रियली। है। संचिता प्रखर, हम लोग ऑडियंस के भी कुछ क्वेश्चन लेना चाहेंगे, बिकॉज टाइम इज रनिंग वेरी फास्ट। तो क्या मैं यस सर। चैट में डालता हूं तो मैं ऑडियंस तक नहीं पहुंच पा रहा हूं, क्या आप ऑडियंस से इंटरेक्ट कर सकते हैं? Yes, yes. Audience are the chat box is open for everybody. चे ओके। So ऑडियंस, इफ यू yes. हैव एनी क्वेश्चन, प्लीज
Feel free to write in the chat box. We'll take your question. Any comments, any questions that you want to ask? Please go ahead. Okay. Pushkar Chawla is asking, what do you think early symptoms of dementia and how can we prevent it? Who would want to answer? Dev, Sorveshwar, or Suresh? None of us are doctors, so it's very difficult for us to give a very straightforward answer to that. Okay. But some of us have experience in handling dementia patients and dementia, Right. you know, people with dementia. I think one of the things that we need to understand very, very early is their symptoms of forgetfulness, first and foremost, because it's simple things like, there are people who will forget to, brush their teeth in the morning or, skip their breakfast, not feeling hungry. Hmm. And then there are small symptoms. At that age, we will typically feel these symptoms are very normal and, on par with that age. But these are symptoms that we need to notice. Okay. So those are early symptoms. But like I said, we are not doctors here. We are caregivers in one sense. Therefore, we can take care of people with dementia. We would broadly guide that to meet a geriatric care doctor to understand more about dementia. इसमें मैं थोड़ा सा ऐड ऑन कर सकता हूँ सर? Please. सर Yes, जो please, मैंने फील Dev, किया, go ahead. हाँ हाँ, जी जी जी, जो मैंने फील किया है डेमेंशिया के अर्ली सिम्टम के बारे में, मेरे फादर, हम लोग बालकनी में खड़े थे, मेरे फादर साहब हमारे घर के सामने से ही निकल गए और 4 घर जाके पूछ रहे हैं कि पता नहीं चल रहा मेरा घर कहाँ चला गया। और हम सोच रहे हैं पापा जी नीचे से निकले और आगे क्यों चले गए। तो पीछे जब आगे चले गए तो किसने बोला शर्मा जी आपका घर तो पीछे चला गया। तो आप तो एक वो सिम्टम था और मेरे फादर साहब गाड़ी जहां पार करके सामान लिया और वॉक करते हुए घर आ गए। तो हमें लगा शायद वो भूल गए होंगे। फिर हमें डॉक्टर साहब को बताया तो तब उन्होंने बताया कि ये अर्ली सिम्टम है इस चीज के, डेमेंशिया के, ये अर्ली सिम्टम है। तो उन्होंने इस बात को बताया, नंबर 1। नंबर 2, जो मेरी कुछ डॉक्टर साहब से लोगों से बातचीत हुई है तो उनका ये मानना है कि अगर डेमेंशिया को समय रहते रोकना है ना, इसका तरीका यह है कि जिस रास्ते से आप कार ड्राइव करके घर जाते हो, डेली जाते हो, ऑफिस जाते हो, तो आपने हर 7वें 8वें दिन उस रास्ते से नहीं जाना, क्योंकि हमारा माइंड प्री सेट कर चुका है। हम बात करते करते फोन पे बात करते थे अपने ऑफिस चले जाते हैं, वहां से बात करते करते तो हमने माइंड को काम पे नहीं लगाया। तो बेहतर तरीका ये है कि आप रूट चेंज करो, तो आपका माइंड अलर्ट रहेगा, इधर उधर देखेगा। ठीक है जी। और जो हमारी दादी नानी ना जब जब बब 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 करती रहती है, जिससे बात करती रहती है, उनको करने दो, उनको कमरे में बंद मत रखो। आप ज्यादा बोलते हो कम बोलते हो, बोलो तो सही, बोलोगे तो अलर्टनेस रहेगी, ऐसा मेरा मानना है सर, जो मैंने फील किया है। Yeah. बस Right. दिस इज Muscle memory is actually both a bone and a vein. तुषार, एक बार तुषु चार्जर Wonderful. है, Thank you, चार्जर Suresh and चार्जर Dev. चार्जर खत्म हो गया। Next question we have from the audience. How can family members be made aware of the challenge ahead and accepting the stage of caregiving for aging parent? How can family members be made aware of the challenge ahead? All right. Who would want to take it? Dev? I think you are. एक बार सर से ले लेते ये हैं कह आंसर। रहे हैं कि परिवार के लोगों को कैसे पहले से अवेयर करा दें कि उनको क्या क्या चैलेंजेस होंगे, क्योंकि उनके पेरेंट्स जो हैं वो एज हो रही है उनकी, तो उनके तो एजिंग से क्या क्या चैलेंजेस होंगे। सबसे पहले तो ना हम सबसे पहले तो सब कैन आई, यस यस प्लीज, अच्छा आप अच्छा, ही बोल रहे हैं, सब आपकी आवाज अच्छा डबल अच्छा डबल आ रही है। अच्छा, अभी ठीक आ रही सर? हाँ अभी ठीक आ रही है। ठीक है जी। अभी क्या है कि हमारे को सबसे पहले से उनसे डिस्कनेक्ट नहीं होना है, डिस्कनेक्ट नहीं होना है। ठीक है। और मेरा ऐसा मानना है कि, और मैं अपने स्टाफ में और अपनी टीम से भी बात करता हूं, सबसे पहले हमें कनेक्ट होना है किसी के साथ, फिर उसको करेक्ट करना है। नॉर्मली हम पहले ही उसको करेक्ट करने लग जाते हैं और उससे कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो अगर हम सामने वाले के साथ कनेक्ट हो गए तो हम उसकी कोई भी छोटी छोटी चीजें हैं तो हम उसके साथ उसको टाइम रहते वो हमें हमसे फ्री होंगे, तो हमें बता पाएंगे कि मेरी बॉडी में या मेरे हाव भाव में ये कुछ चेंजेस आ रहे हैं। जब हमें पता चलेगा तो हम उसके अकॉर्डिंग कुछ कर पाएंगे, राइट। और
इसके अलावा अगर प्रिवेंशन की बात करें, तो जो सीनियर सिटीजन जिस घर में रहते हैं और किसी कारण से हम लोग वहां नहीं रहते हैं, तो हमें एक एंटी स्किट मैट होता है वो बाथरूम में करना है, लगा के रखना है, क्योंकि मैक्सिमम सीनियर सिटीजन बाथरूम में ही स्किट करते हैं, टाइलें बहुत स्लिपरी होती हैं। और एक उनके उनके उठने बैठने के लिए रेलिंग हो। और इसके अलावा घर में कोई भी फर्नीचर ना शार्प नहीं होना चाहिए, वो कर्व वाला फर्नीचर रखना है उनको। और हो सके तो फ्रिज के ऊपर एक मैनेजमेंट बना दीजिए जो घर पे काम करने वाली थी, इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इनको हमें कॉल करके अपडेट करना है, अगर किसी कारण से पेरेंट्स के साथ हम लोग नहीं रह पा रहे हैं तो। ऐसा मैं नॉर्मली करवाता हूँ। वंडरफुल। इसके अलावा रमेश, आपने ये सवाल पूछा है, तो अगर आपके घर में सीनियर सिटीजन पेरेंट्स हैं या एजिंग पेरेंट्स हैं, तो आपको अपना घर का एनवायरनमेंट, जैसा देव ने बताया, वो तो करना ही है। अपना माइंडसेट भी आपने करना है कि पेरेंट्स एजिंग हो रहे हैं। अब मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि 60+ इज, आप एक उसको स्टार्ट कीजिए कि वो 61 है तो 1 साल का बच्चा है, 65 है तो 5 साल का बच्चा है, 70 है तो 10 साल का बच्चा है। और हर 10 साल में फिर एक से गिनती शुरू कीजिए, 71 है तो फिर 1 साल का बच्चा है। आप इसको अगर इस तरीके से अपने माइंड को कंडीशन करेंगे, जैसे हम अपने छोटे बच्चे को कोई भी सवाल 100 बार पूछने पे भी हैप्पीली जवाब देते हैं, बार बार देते हैं, वैसे ही अगर हम अपने एजिंग पेरेंट्स को भी एक ही सवाल का 20 बार, 50 बार, 100 बार जवाब देंगे। ये पहला स्टेप है मेरे हिसाब से। अगर हम इतना भी कर लेंगे, बाकी चीजें हम बड़े आराम से मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि उनको हमसे बात करना है, हमसे सेम क्वेश्चन बार बार पूछना है, ये एक्सेप्टेंस हमें होनी चाहिए। और उसके अलावा घर का एनवायरनमेंट अगर हम थोड़ा सा एल्डर्स के हिसाब से कर लेंगे, तो उनको लगेगा कि मेरे बच्चे मेरे बारे में सोच रहे हैं। जैसा उन्होंने, जब हम 6 महीने के थे तो पूरे घर में मैट बिछा दिए थे, जब हम साल भर के हुए तो पूरे घर में हमारे लिए ऐसे एनवायरनमेंट बना दिया था कि हम कहीं पे टकराएं तो लगे नहीं। बस हमें वही करना है उनके लिए, और कुछ अरविंद नहीं सर, करना है। एक बात समझ में नहीं आती जी। कि जब हमारा छोटे बच्चे होते हैं ना, बेबी बच्चे होते हैं, वो 10 बार तुतला के बोलते हैं तो हम कहते हैं कि एक बार और बोल, हमें बड़ी खुशी मिलती है। एग्जैक्टली। हमारे फादर मदर अगर 2 बार बोल देते हैं तो हमें चुभता क्यों है, ये समझ में बस नहीं वो आता। एक्सेप्टेंस का खेल है देव। जहां एक्सेप्टेंस हो जाएगी, वहां कुछ नहीं होगा। हम 4 बहन भाई हैं, एज आई मेंशन, पेरेंट्स आर एजिंग। हम्म। हमारे घर में कभी ये कोई चैलेंज नहीं आया, बिकॉज हमने इस चीज को बहुत अर्ली स्टेज पे एक्सेप्ट किया। इसीलिए मैं बता पा रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता पा रहा हूँ। मेरी सोसाइटी में, जो जहां मैं रहता हूँ, इतने सीनियर सिटीजन हैं, एंड दे आर ऑल माई लाइक फ्रेंड्स। ठीक है, मुझे उनसे कम्युनिकेट करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि एक एक्सेप्टेंस है कि यार, ये एक सवाल को 2 बार भी पूछेंगे, ये हट भी करेंगे, ये जिद भी करेंगे, गुस्सा भी कर सकते हैं। जैसे वो कभी कभी मुझे दौड़ते हुए को पकड़ के बैठा लेते थे कि आज तुम्हारे साथ योगा करना पड़ेगा। मैं जिद नहीं करता था कि भाई मुझे दौड़ने दो, मैं कर लेता था। तो उनको सबको लगता था यार ये कितना हम्बल है, कितना सपोर्टिव है। बस वही हमें अपने पेरेंट्स के साथ करना है घर पे, उससे ज्यादा मुझे नहीं कई लगता हाँ, बहुत कुछ कई चेंज बार नहीं होता हाँ, है। और कई बार एक्सेप्टेंस। बुलाते हैं कई बार हमें बुलाते हैं कि प्रोग्राम में ना, तो मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ कि जब आप अपने बच्चों के टाइम में ऐसे एंजॉय लेते करते हो ना, कि एक बार और बोल के दिखा, एक बार और बोल के दिखा, ऐसे ही अपने माँ बाप जब बोलते हैं तो उनकी बात सुन लो, क्योंकि सेम टाइम आपके साथ भी गुजरा है। बिल्कुल, बस। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली यस। लास्ट क्वेश्चन हम लेंगे दिव्या द्विवेदी का। अ, उनका भी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। वो पूछ रही हैं कि समटाइम्स केयर गिवर्स फील एग्जॉस्टेड, हाउ टू मेक देम मोटिवेटेड एंड एम्पैथेटिक। सो ये केयर गिवर कैन बी बोथ, लाइक फैमिली मेंबर ऑल्सो, कैन बी अ person who is paid for that caregiving, and both can feel exhausted. सो उनको कैसे मोटिवेटेड रखना है, ये सवाल है दिव्या जी का। तो मैं समझता हूँ कि अगर वो फैमिली मेंबर है, तो उसके लिए, उसको मोटिवेटेड रखने के लिए डिफरेंट तरीके हैं। और जो पेड केयर गिवर है, उसके लिए तो मनी इज द मेन मोटिवेटर, अलोंग विद उसकी थोड़ी केयर हम करें, उसके भी वेल बीइंग का हम ख्याल रखें। कभी कभी वो अगर हमारे
एजिंग पेरेंट्स को कुछ कह दे तो हम उसको गलत समझने की बजाय कभी कभी उसकी सपोर्ट करें। ये छोटी छोटी चीजें अगर हम करेंगे तो वो दैट पर्सन विल फील मोटिवेटेड। और अगर वो फैमिली मेंबर है तो डेफिनेटली एग्जॉस्टेड वो तब फील करता है कि पूरी फैमिली इंजॉय कर रही है और वो अकेला केयर गिविंग कर रहा है। तो अगर सब लोग मिलके केयर गिविंग करेंगे तो एक मोटिवेशन होगा। एंड मुझे लगता है कि उसको बहुत ज्यादा मोटिवेटेड नहीं रख सकते, उसको भी सपोर्ट करके मोटिवेट कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। Two quick points in addition to what you've said. I think प्लीज we must प्लीज। understand that whether he's a family member taking care or external paid caregiver, they also require their space. They also require their needs to be taken care of, whether it's their hygiene, their health care, their problems. They're all human beings, and each of them will have their own individual problems that needs to be taken care. In my experience of running a home care company for the last 9 years, one thing that I've learned is the patient is important, the caregiver is probably more important. Okay. Unless the caregiver is taken care of properly, the patient will not be taken care of properly. So we need to understand that first. I'm talking from my experience. I'm not trying to lower the patient or lower the dignity of patient. I'm not saying anything of the sort. I'm just saying we need to give equal importance to the caregiver as well. Provide them the space, provide them the time, provide them the facilities, provide them dignity. When an external paid caregiver comes to your home, treat them, in a normal fashion. Don't make them feel that they are pariah in your house. Give them the right kind of food and environment for them to take care of the patient properly. These are lessons that we have learned over a period of time. सर इसमें एक लाइन में जोड़ना चाहूंगा। सर ने बिल्कुल सही प्लीज। बोला है, बहुत अच्छा बोला है। मेरा ऐसा मानना है कि मैं सबसे कहता हूँ, जो अपनी टीम को हम लोग टीचिंग करते हैं, लर्निंग देते हैं, कि केयर गिव, खासतौर पर केयर गिवर की बात कर रहा हूँ, कि बेटा आप दादू का ध्यान रखना जिनके लिए आपको हायर किया है, पूरी फैमिली आपका ध्यान रखेगी। बस आपने गेट खोलने के लिए, पानी पकड़ाने के लिए नहीं बुलाया गया आपको। आपका काम है दादू का ध्यान रखना। बस दादू को आप एकदम चमका के रखो, आसपास का एनवायरनमेंट इतना हेल्दी रखो, पूरी फैमिली आपका ध्यान रखेगी। और केयर गिवर बहुत अच्छे लोग होते हैं, बस उनको ना थोड़ा सा इमोशन चाहिए, थोड़ा सा प्यार से बात कर लो ना, बस। आपके घर के चार काम और करके देते हैं। हम उनको एग्जैक्टली। नौकर समझ लेते हैं, गड़बड़ बस यहाँ हो जाती है। हम तो पैसा दे रहे हैं, आप चार बार उसको सुना देते हो ना, हम तो 30,000 रुपए दे रहे हैं, हम तो 25,000 रुपए दे रहे हैं ना, उसका मन खराब हो जाता है कि मैं अब 25,000 का ही काम करूंगा। बिल्कुल तो ठीक फिर बात। वो बहुत दिक्कतें आती हैं यहाँ पे। एब्सोल्युटली बिल्कुल ठीक बात हाँ, है। एक्चुअली वो भी तो इंसान ही ना, एंड ऑफ द डे, है ना। और इंसान, Absolutely. मैं एक बार स्वामी रामदेव जी से मिला था, तो उन्होंने बोला था कि बात करने से ही बात बनती है। तो एक बार एग्जैक्टली। बात करेंगे तो आराम से सारी बात बन जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच देव, सुरेश, सुरेश। Thank you so much. It was a wonderful discussion with you guys, and all our audience are really happy. They are giving us wonderful remarks. Thank you, Gauri, Kumaran, Biswajit. Thank you, everyone, and thank you, audience, one for your great participation. right. Yes, Suresh, some last words, please. Yes, last words is that I think caregivers और पूरा इकोसिस्टम को एक साथ जोड़ना है सिल्वर जीनी के साथ, बिकॉज यू नो जो हम पहले बता रहे थे कि सिमिलर सोच वाले लोगों के साथ अगर आप रहेंगे, और तब फिर ना आप शेयर भी कर सकते हो आपका दुविधाएं। एंड आई Absolutely. थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मान लीजिए अगर केयर गिवर का भी कोई प्रॉब्लम वो शेयर कर पाए हमारे प्लेटफॉर्म पे, राइट, और वो बहुत बहुत यूनिक प्रॉब्लम हो सकता है, काफी कॉन्टेक्चुअलाइज्ड प्रॉब्लम हो सकता है, Right. क्योंकि कम्युनिटी बहुत अच्छा से ग्रो कर रहा है, और एक शेयर और केयर इंटरनल एक डायनामिक्स भी हम लोग महसूस कर रहे हैं। बिकॉज ये सेशन सच में खत्म नहीं होना चाहिए, बट ये तो टाइम के बिगिनिंग लिए है। वी आर जस्ट Suresh, ये टाइम। beginning है, एग्जैक्टली। and we will come back with many more such session. थैंक यू सो And मच। मतलब believe my words, वो जैसे एक गाना है ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो ये बिल्कुल वैसा ही है। और हम लोग दोबारा मिलेंगे, बार बार मिलेंगे, और हमको डेफिनेटली ट्रांसफॉर्म करना ही है। मतलब कोई सेकंड थॉट नहीं है उसके बारे में।
may whatever come, we will all work together and transform this industry for sure. Yeah. And we Truly will all honored and Thank you humbled collaborate. to so be. much. Thank you so Very much. Thank you soon, all. I will organize a meeting between Dev and Polomi, and you already met Polomi. You know, we will all collaborate, we will all support each other, and we will definitely make things happen. Yeah, that's the only way forward. Thank you, sir. I think what concluding statements do you want from me? You have all, talked so well. I'll just say a quick words with my colleague Prakhar sir as well. Thank you once again to our fantastic panelists. I'm truly thrilled to be here, listening to each of you and taking away so many learnings. I understand we are meeting online. I'll still like to present a small token of gratitude from Silver Genie's side, a memento to express a heartfelt appreciation. And we are very honored to have all of us with you today and celebrating the International Day of Care and Support. Thank you for sharing your time, insights, and wisdom with our community. I'll pass it on to you, Professor. Yes, yes, and thank you again for the audience as well. They were very participative and good questions coming in from the participants as well, uh, which were related to the topic. And thank you so much, and we'll be looking forward in the for you on the next webinar, which is on 19th, continuing on the same theme for transforming care, and it is on 19th at the same time, 5 p.m. to 6 p.m. And we continue this discussion with three more very enigmatic panelists, and we'll see you then soon. Thank you so much for joining. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank Thank you you so so much. much. Thank you Thank all. you. Thank you. Thank you and all the best. Thank you. Thank you. We are Thank you, sir. coming back on 19th. We Thank would you, like sir. to meet you all. I would request all the panelists also to join us on 19th and Sure. listen to other speakers. Thank you so Sure. much. Sure. Thank you, Thank you. Sansita and Prakhar, for Bye. making this Bye, everybody. session. You guys have worked really hard. Thank Thank you, you so much. Sansita, Prakhar. Thank you, And Poulami thank you, Fatma. Poulami, for Thank you, Arvind ji. behind the scenes support. Thank you so No And much. worries. thank Thank you, you. sir. Thank you, everybody. Thank you. Thank you. Bye Bye-bye. bye.